we did about considering motion of a body with respect to inertial frame of reference and with respect to non-inertial frame of reference. Students, inertial frame of reference, anybody can tell me what exactly inertial frame of reference ka matlab? Students? You must have done it in chapter Laws of Motion, students. Trying to define motion of a body with respect to any observer at rest. Students, we did relative motion considering observer at rest या observer in motion. कुछ याद हो तो police van as well as thief, relative motion. Can you repeat that term? Pardon? Can you repeat that term? Inertial? Inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. These are the terms used with respect to laws of motion. Students, हमने जो relative motion किया था उसके अंदर मैंने बोला था कि observer या तो rest पे होगा या तो motion में होगा. Agreed? Two cars coming in the opposite direction, two cars going in the same direction. We did questions based on to that. We did a question based on to a police van and a thief also in that case. So there were several questions based on to relative motion we did it. लेकिन यहाँ पे अगर observer rest पे है तो उसको हम करते हैं inertial frame of reference. लेकिन अगर motion accelerated है, then we can consider it as non-inertial frame of reference. This is actually a concept related to your laws of motion, students. But yes, we can define motion with respect to an observer. क्या ये clear हुआ students सबको? Is this part clear? Yes, sir. Then students, we did the graphical part of it. We did questions related to that. Now we're trying to go for students projection on an inclined plane. Today we'll be completing the entire kinematics to it. Only the last tail is left. And if time permits, आज अगर time होगा तो we'll start with circular motion also. Is this clear to all of you all? Yes. Okay, now students, listen carefully. On page number 113, students, 113 students, do you have your module in front of you, students? I wanted to solve these questions from in chapter. Try to solve 7th, 8th, 9th, 10th, and 11th. 7th, 8th, 9th, 10th, and 11th. So what's the page number? Page number 113, 113. I'll speak out the first question, students. What exactly 7th question speaks about, students? 7th question here hai, a 100-meter sprinter increases speed from rest uniformly at the rate of 1 meter per second square up to 3/4 of the total run and covers the last quarter with uniform speed. यानी students 3/4 का मतलब 3/4 of the distance उसका motion accelerated होता है. V is greater than U. Acceleration is positive. लेकिन जो last 1/4 होगा speed constant है, students. Hope you are getting this clear. Yes, sir. I'm speaking about first question, students. Page number 113 in chapter questions. Okay, your problem number 7 speaks about a 100-meter sprinter. So this is point A, this is point B. The total distance is 100 meter. यहाँ पर उन्होंने बोला है accelerated motion. Oh, Smith has raised his hand. Accelerated motion is up to 3/4. 3/4 यानी if I consider at point C, तो ये 75 मीटर के लिए acceleration है 1 meter per second square. लेकिन बाकी का जो 25 मीटर है students, वहां पे speed constant है. अगर speed constant है students, तो यहाँ पे acceleration क्या होगा? Students, for this part of the journey. Yes, can you tell me?
लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे? 0. Absolutely correct, 0. और यहाँ पे motion is accelerated, that means can I say therefore v is greater than u? और clearly बोला है sprinter is starting from rest, तो initial velocity तो 0 होगा, यहाँ पे उसकी final velocity होगी और वो velocity फिर constant रहेगी. क्या ये clear हुआ? हाँ students? क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछा गया है how much time it takes to cover half the distance. Agree students? How much time is taken to cover the first half and the second half of the run? First half. And if for distance covered in the first half, how much is the time taken? And for the second part of the distance, how much is the time taken? Hope the question is clear to all of you. Okay, it seems Smith has raised hand. Anybody else who wants to answer for this? Okay, Smith, answer. So I can answer also. Okay, let Smith answer. Then if in case we get stuck up, you can put forward. So sir, from here we will go with the formula S equals to ut plus half at square. Yes. हाँ, तो उससे क्या मिलेगा मुझे? Sir, can I say? No, wait a minute. Smith, S is equal to ut plus half at square. You said it. लेकिन उससे हमें क्या मिलेगा? What are you trying to find out? मुझे क्या पूछा गया स्टूडेंट्स? टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट हाफ एंड टाइम टेकन फॉर द सेकंड हाफ. फर्स्ट हाफ का मतलब 50 मीटर्स के लिए पूछा है, ना कि 75 मीटर्स. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. कंडीशन दिया है 75 मीटर्स और 25 मीटर्स का. रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. लेकिन टाइम पूछा है फॉर द फर्स्ट हाफ एंड द सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी. यस स्मिथ. Yes sir, so in the we will find velocity achieved in third quarter, which will be v1 equals to u plus 80, which is equal to 5 root 6, and then in last 1/4 quarter t2 equals to s2 upon v, which will be 25 upon root 5 root 6, which will be 5 upon root 6 second. Then the total time is t, so t1 plus t2, which is equal to root 5 root 6 plus 5 upon root 6, which will give 35 by root 6. Then the time to cover first half, so s3 equals to ut plus half at square, which will give 10 seconds in the first half cover. Then the time taken to cover the second half will be t minus t3, which will be 35 by root 6 minus 10 seconds, so which will give 4.3 seconds. Absolutely correct. Absolutely correct. स्टूडेंट्स, क्या तुम्हें समझ में आया उसने क्या बोला? उसने ये जो है ना A to C को उसने पहले टाइम T1 लिया है, C to B को उसने ये टाइम T2 लिया है, इसको इसने टाइम T3 कर दिया और ये T4 कर दिया. Yes, you can go for that. Doesn't matter. Students, is it clear what exactly he has tried to do it? उसने क्या किया? मतलब students, listen carefully. First you found out time taken for the sprinter to cover 75 meters race. यानी फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? तो तुम बोलोगे सर S is equal to ut plus half at square. लेकिन ये t1 स्क्वायर के लिए है. डिस्टेंस कवर कितना है सर? पहले केस में 75 मीटर्स. प्लीज पे अटेंशन स्टूडेंट्स. इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो 0 ही रहेगा. हाफ क्या मोशन एक्सेलरेटेड है? हाँ सर एक्सेलरेटेड है, तो a तो कितना होगा? 1 into t1 स्क्वायर. तो कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ t1? इसको सॉल्व करो तो कैन आई गेट द वैल्यू ऑफ t1? एंड स्मिथ, व्हाट यू गॉट द आंसर फॉर t1? कितना मिला तुम्हें? 5 root 6 मिला. एक Yes, तुमने sir. 5 root 6 बोला था
और एक शायद Yes. बोला था 5/√6, ये Yes, 5/√6 है। Students will get T1 as 5/√6 seconds. Second case के लिए क्या किया? Same formula, students. No, sorry. Now in the second case, what exactly? Speed remains constant, students. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे? यहाँ so पे what V1 exactly? equals to U plus 18. Yes, लेकिन मुझे वेलोसिटी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि मुझे वेलोसिटी नहीं मालूम। यहाँ पे स्पीड, ध्यान से सुना स्टूडेंट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तुम्हारे हाथ में कितना है? 25 मीटर, लेकिन तुम्हें स्पीड नहीं पता स्टूडेंट्स, वी नहीं पता, तो वी कैसे निकालोगे? तो स्टूडेंट्स कैन यू से सर वी हम यहां से निकालेंगे, हमें यू मालूम है, बी पूछा गया है और ए मालूम है। आई गेटिंग इट? एंड टाइम इज गिवन टू मी, तो कैन आई यूज अ फॉर्मूला वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इनटू टी बार। हाँ स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? मुझे यहाँ पे वी मिल जाएगा, वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस एट 75 मीटर्स। तो वी पूछा गया है, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, एक्सेलरेशन 1 है। How much is the time known to me? Sir, 5/√6 है। So what is the velocity? Is this clear? Can I substitute this v back over here? क्या ये clear हुआ students? हाँ students, is this clear to all of you? Then I'll proceed further at students. Is this clear to all of you all? Yes, sir. Getting it? Nishant, you are getting it, isn't it? Yes, sir. Okay, and who was getting it? So हम तुम्हें भी मिल रहा था ये आंसर? तो हम अभी है ही नहीं, देखो। नहीं सर, हूँ अभी। अच्छा, तो तुम्हें मिल रहा था ये आंसर? हाँ सर, मिल रहा था। Okay. Since the rest of the students are getting it, Swapnil, what about you? समझ में आ रहा है? Yes, sir. प्रज्वल, मयांक, Yes, sir. जेसन, Yes, sir. अश्मिता, अश्मिता समझ में आ रहा है? तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे अभी टाइम निकाला सही केस में, तो ये क्या होगा? कैंसिलेशन में क्या होगा सर? ये 5 और 5/√6, 5/√6 होगा, है ना स्टूडेंट्स? यानी टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम ऑफ द जर्नी, यानी यहाँ से यहाँ पे विल बी T1 प्लस T2, है ना? दैट बी व्हाट? अभी इसको तुम सॉल्व करके स्टूडेंट्स यू कैन गेट योर आंसर इन डेसिमल, दैट 20 सेकंड्स। मुझे चाहिए टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट हाफ एंड टाइम टेकन फॉर द सेकंड हाफ। कैन आई गेट द टाइम टेकन फॉर द फर्स्ट हाफ? यस, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, s1 कितना है? 50। ये तो 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन कितना है? 1 ही है। कैन आई फाइंड आउट t3 द होल स्क्वायर? तो व्हाट इज t3? व्हाट इज द टाइम टेकन ऑफ द फर्स्ट हाफ? 10 सेकंड। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? फर्स्ट हाफ के लिए टाइम कितना होगा? 10 सेकंड्स। ये क्लियर हुआ? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे भी 0 ही है ना, लेकिन मुझे T4 चाहिए। T4 के लिए मैं क्या करूंगा सर? T4 के लिए आपने टोटल टाइम निकालो ना, आपके हाथ में टोटल टाइम तो है, T1 प्लस T2, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं? T3। कैन आई गेट माय आंसर फॉर T4? हाँ स्टूडेंट्स? Yes, sir. Please students try to get the answer of 5/√6, 5/√6, substitute back over here, इन दोनों का एडिशन का टाइम यहाँ पे लिखो, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 10 seconds. That becomes the time taken for the second half. Time taken for the first half at 10 seconds. यानी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में किया कि हम लोगों ने टोटल टाइम ऑफ द जर्नी निकाला है, उसमें से फर्स्ट हाफ का 10 सेकंड्स निकाल दोगे तो सेकंड हाफ में जाएगा। क्योंकि रीजन क्या मालूम है स्टूडेंट्स?
acceleration motion is accelerated not till 50 meters, it is accelerated till 75 meters. स्टूडेंट्स तभी जाके हमने डी तक एक्सेलरेशन वही रखा, लेकिन डी के बाद में स्पीड अभी भी कांस्टेंट नहीं है। स्टूडेंट्स डी के बाद में अभी भी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, डी के बाद में और 25 मीटर तक स्पीड बढ़ रही है, उसके बाद में 25 मीटर्स के लिए कांस्टेंट है। That is why you can't judge the answer over here straightforward in the first case. तुम इसका आंसर निकाल सकते हो, इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे तो तुम ये आंसर मिलेगा। Hope this is clear. And please, I'm giving you all 2 minutes to solve this part and get the answer. And those who have done with the 7th one, go ahead with the 8th one. Can I erase this, friends? इसको मैं erase कर दूं अभी? Yes, sir. Okay. 8th one, who has got it? Smith has raised his hand. Anybody else other than Smith? Question number 8. I'll just read the question once. A motor car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds to a velocity of 20 meters per second. It then runs at a constant speed and finally it is brought to rest in 40 meters. You can show it with graphical way also, students. Total distance covered is 640 meters. Find the value of acceleration, retardation, and total time taken. Value of acceleration, retardation, and total time taken. Smith, तुम्हें आ रहा है ये question? Next वाला 8 आता है? Yes, sir. Okay, just hold up. I'm waiting for somebody else also. If anybody else who wants to answer, please do raise your hand. If not, then I'll give a chance to Smith. Question easy है students, इसलिए मैं diagram भी नहीं बना रहा हूँ मैं इसका. So wait for 1 minute. Yeah, I'm waiting. With तेरा 8 हो गया तो 9, 10, 11 तक पूरा चारों चार वापस, और 9, 10, 11 तक बाकी के 3 B. Come on, Alisha, try it out. Earth, Arman, try it out, Arman. Aryan, Ashmita, Krisha, Mayank, Mayur,
प्रज्वल, पूर्वी, प्रथम, प्रयाग। सोहम तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा सोहम? नहीं है अभी। Swapnil, you have to try it out, Swapnil. Yes, Nishant, getting it? I'm finding the last one, which is the total time taken. Okay. Can you tell me the approach, how to go about with it, so that I can understand that you're going on a correct track? So first, what I done was fine. It is simple to just use v is equal to u plus at to find acceleration. So 20 is equal to 0 plus 10a. So Okay. 10 is equal to 20. So a is equal to 2 meter per second square. Okay. And you can find the distance of that, which is s is equal to ut plus half at square. And then you can get 100 meter. Then we have to find the constant value. No. Wait. The time of the constant distance is not like time is not given. So we have to find the retardation. So Okay. And then to find out the time for constant, what do you do? After we find the distance of retardation, so we add both the distance of retardation is given as 40 meter. You add both of them. Now total distance is given as 640 meters. So we subtract that, and that's the constant distance. Okay. Then we use the velocity was constant at 20 meter per second. So velocity is 20 meter per second. With time is also given. So so we can find time like that. Fine. So you use v is equal to s by t. Yeah. Okay, fine, students. Absolutely correct. Okay, Smith, तुम्हारा approach क्या था? So I had done with the at the first I had a total distance which is s1 plus s2 plus s3, and the acceleration initial will be 20 divided by 10, which will be 2 meter per second. So the acceleration and Seconds per 2 meter per second square. So and v square minus u square equal to 2s, which will be minus 20. The whole square equals to 2a into 40, which will be acceleration find will be minus 400 upon 2 into 40, which will give minus 5 meter per second square. Then I find the s1, which is half into 2 into 10 square, which will be 100 meter, and s3, which is given as 40 meter. So through which we can find t3, which is 4 second, and then the total distance will be 640 equals to 100 plus s2 plus 40, which will give s2 equals to 500. So with the help of s2, we will find the time. So which will be s2 equals to v into t, which will be 500 equals to 20 into t. So I got 25 seconds. So the total time taken will be 10 plus 25 plus 4 seconds, which will be 39 seconds. Okay, students. Students, in both the cases, what exactly they have tried to go for it, you know? उनको total distance दिया हुआ था. Students, तुम्हें time किसके लिए चाहिए? For the speed remaining constant. Now, please pay attention. 8-1, everybody listen. The question was very easy. Please, students, बहुत ही easy question है. थोड़ा ध्यान से read करो, students. Once again, I'll please speak out. A motor car starts from rest and accelerates uniformly. तो अगर मैं इसका graphical representation दिखाऊं, students, so it's like this. A motor car starts from rest and accelerates uniformly for 10 seconds. So first 10 seconds motion is accelerated. तो ये मैं time t1 लूंगा 10 seconds. Yes, sir. Acceleration. Yes. तो कहाँ था? पर यहाँ पर ही था. नहीं तो नहीं था. Students, I was asking about Soham ना, है ना? आया ना? Yes, sir.
I was asking about you and you were not there, so तुम बीच-बीच में कहाँ चले जाते हो सोहम? अरे नहीं अभी राइट नाउ सच ही बोलना. Don't speak lies. क्योंकि मैं नहीं तो अभी सर मैं अविनाश सर को बोलूंगा तुरंत तुम्हारे डैड को फोन करेंगे अभी. तुरंत तुम्हारे डैड को फोन करेंगे अभी. सर वॉशरूम सच ही में बोलना, झूठ मत बोलना प्लीज. सर झूठ नहीं बोला सच में आई वाज इन हाँ. वॉशरूम राइट नाउ हाँ तो बोलो ना करके कि वॉशरूम गया था. मैं मना का थोड़ी कर रहा हूँ. मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ कि मत जाओ करके यार. मुझे भी वॉशरूम जाने के लिए होगा, है ना. तो यस सर इट्स नॉट दैट, इट्स नथिंग रॉन्ग इनटू इट. तुम गलत नहीं कर रहे हो. वॉशरूम जाओ ना, किसने मना किया. लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो यानी मैं पूछ रहा हूँ तो तुम लिटरली यू सेइंग कि नहीं नथिंग ऑफ दैट. तो रीजन अगर सही है तो मेरे को कोई सॉरी प्रॉब्लम नहीं भैया. सॉरी सर सॉरी मैं ये सोल्यूशन के लिए पूछ रहा था. Smith had answered, Nishant had answered, both of them had answered. So I was asking whether you were able to crack it or not. कितने दफे तुम्हारा नाम पूछा मैंने कि so are you able to get it, are you able to get it? यस Because सॉरी सर रियली पहले क्वेश्चन के लिए तुम्हें चांस नहीं मिला था. या That's why I thought नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन के लिए तुम्हें चांस दो, लेकिन तुम अपने सीट पे नहीं थे. या सर आई विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर आई विल डू द नेक्स्ट Okay, क्वेश्चन doesn't matter. Okay, students, I mean, now listen carefully, students. यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो a motor car starts from rest. Initial speed अगर 0 है, for the first 10 seconds, students, motion is accelerated. Motion is accelerated यानी final velocity, students. Final velocity is greater than the initial velocity, which is 0 meter per second, students. At time t equal to 0 seconds. Acceleration पहले केस में क्या होगा? Positive आएगा, students यहाँ पे. अभी उन्होंने क्या किया further ahead? And the maximum velocity over here is how much? 20 meter per second. This is 20 meter per second. Then it then runs at a constant speed and finally it is brought to rest in 40 meters. Are you getting it? That means now it moves with constant speed for some time and then it is brought to rest. Brought to rest का मतलब क्या होगा? Final velocity 0 हो गया. Initial velocity कितना है? 20 है. तो यहाँ पे क्या हुआ? Is the acceleration positive or negative? तो तुम क्या बोलोगे सर? Acceleration is what? Negative. यहाँ पे तुम्हारा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा और यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, is the graph clear to all of you all? Yes, sir. Motion is accelerated, so acceleration यहाँ पे पॉजिटिव है. यहाँ पे motion is retarded, तो acceleration नेगेटिव है. ये जा रहा है पैरेलल, तो ये है कांस्टेंट स्पीड. स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. तो यहाँ पे क्या होगा? एक्सेलरेशन 0 होगा. ये टाइम t1 है. यहाँ से हम इसको लेते हैं टाइम t2. एग्रीड. और यहाँ से इसको हम लेते हैं टाइम t3. हाँ, लास्ट केस के लिए उन्होंने डिस्टेंस बोला हुआ है स्टूडेंट्स. It then runs a constant speed and finally it is brought to rest in 40 meters with constant retardation. Are you getting it? So now when I speak about what exactly first told, so let us first find out the acceleration in the first case. So v minus u upon t is equal to acceleration in the first case. V कितना है? Sir, it's 20. Initial velocity is 0. In time 10 seconds. So what is the acceleration? So the acceleration is plus 2 meter per second square. Agree, students? We've got the acceleration in the first case. क्या ये clear हुआ? Students, is this part clear to all of you all? Yes, sir. Now what is the distance given? Students, they've given to you that the motion is getting retarded, but for retardation, students, what are the distance covered? The distance covered is 40 meters. Using which equation? I can get negative acceleration, students. V square, U square, 2as. क्या ये clear हुआ, students? Motion retarded है. Students, motion retarded है तो final velocity क्या हो जाएगा? सर, final velocity 0 है. ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा स्टूडेंट्स. यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देखो कितना है? 20. ये आएगा. यस सर. तो देखो 20 स्क्वायर प्लस 2 400 एक्सेलरेशन. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40 है ना. डिस्टेंस कवर्ड इन दिस केस. You get my acceleration. What is the acceleration we consider? It's 400 upon 80. What's my answer? -5. So acceleration is -5 meter per second square. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स सबको? यस सर.
You are yawning. You are yawning. Soham? No, sir, I'm not yawning. Okay, fine. Now, what is the question now, students? Find out the distance, the total distance covered is given to you as. उन्होंने क्या पूछा? Acceleration. तो तुम्हें पहला आंसर मिला? Yes. उन्होंने retardation पूछा? Did you get the second answer? Why not? Now, what exactly the third answer is asked? Total time. Students, total time का मतलब T1 तुम्हें पता है, T2 तुम्हें नहीं पता, T3 नहीं पता. Can I find out T3? Students, T3 निकाल सकते हो? देखो ना, acceleration तुम्हारे हाथ में, final velocity मालूम है, initial velocity मालूम है. Can I get T3? Yes. V minus U upon A is equal to T. Final velocity क्या है? Sir, it's 0. Initial कितना है? 20. Acceleration कितना है? -5. What is the time taken in the third case? 4 seconds. यानी यहाँ के लिए क्या टाइम होगा? 4 seconds. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Is this clear, students? Yes, sir. All of you all who are into the group, is this much clear to all of you all? In the first case, motion and accelerated acceleration positive है. Second case में students distance covered for retardation दिया हुआ था students. तो हम लोग ने acceleration -5 लेके आए. After getting acceleration -5, I got the time taken in this case. अभी हमें total time पूछा है students. Total time के लिए तुम क्या करोगे? Sir, total time के लिए तो ये तीनों को addition करना पड़ेगा. तो मुझे final answer मिलेगा ना. मुझे ये तो मालूम है, मुझे ये नहीं मालूम. So what exactly is Nishant and this guy has done it, Smith has done it. दोनों ने क्या किया मालूम है? उन्होंने ये डिस्टेंस निकाला. ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस तो 40 दिया है ना. उन्होंने ये एरिया अंडर द ग्राफ लेके या डिस्टेंस का फॉर्मूला लेके तुमने डिस्टेंस निकाला. टोटल डिस्टेंस कितना दिया उन्होंने? 640 दिया. 640 में से इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया है ना. They got the distance of this and speed remains constant. तो यहाँ पे उन्होंने यूज कर दिया v is equal to s by t. कुछ समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ये डिस्टेंस दिया है 40 मीटर्स. क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? क्यों नहीं? Why can't you find out? फॉर्मूला कैसे यूज करोगे? सर s is equal to ut plus half at square. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है ना. हाफ इनटू एक्सेलरेशन कितना मिला मुझे? 2. टाइम स्क्वायर कितना है? 10 स्क्वायर यानी 100. What's my answer for this? This becomes 100 meters. ये 100 है, ये 40 है, तो 140 हो जाएगा. Are you getting students? टोटल डिस्टेंस कितना है? 640 में से 140 निकाल दो तो बचा कितना? स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? ये 100 मीटर्स, ये 40 मीटर्स. टोटल डिस्टेंस कवर कितना है? 640. उसमें से 140 निकालो तो कितना बचा? 500. 500 meters. What is the speed over here? So speed is 20. What is the time taken? What is the time taken over here? What is the time taken over here? So distance is how much? 500 upon speed is 20. What's the answer? 25 seconds. So what is the total time? 25 plus 10 plus 4, that is 39 seconds. Yes, the total time will be equal to how much? T1 plus T2 plus T3. That is 10 plus 25 plus 4. That is 39 seconds. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, सेकेंड वे कैसे होगा मालूम है? अगर मैं ये डिस्टेंस नहीं निकालूं स्टूडेंट्स, डू आई नो द एंटायर डिस्टेंस? यस. व्हाट इज डिस्टेंस ओवर हियर? व्हाट इज डिस्टेंस? द एरिया अंडर द ग्राफ. हेलो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस क्या है? देखो, अगर मैं वो लेता ना तो मेरा डायरेक्ट आंसर आता. सॉल्व करूं? स्टूडेंट्स मुझे बताओ, व्हाट इज एरिया अंडर द ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या होगा? तो बोलोगे सर डिस्टेंस, तो कहने से ये 640 हो जाता है ना. इज इक्वल टू हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स. ये मुझे डायरेक्ट आंसर मिलता. मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं होती. हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स कहने से ये एक पैरेलल साइड है और ये एक पैरेलल साइड है. समझ में आ रहा है? तो ये पैरेलल साइड कौन सा है? सर T2 प्लस ये पैरेलल साइड क्या है?
So this is T1 plus T2 plus T3 into height. ये तुम्हारा height है h. अभी देखो इसको सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना फास्ट होगा? तुम्हें s की जरूरत नहीं है ना? फिर इसमें से इसको सबट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. You can do in this way also, doesn't matter. लेकिन ये तो मैं डायरेक्ट मिल गया. 640 मालूम है, हाँ सर. 2 मालूम है, क्या यहाँ पे T1 मालूम है? Yes. Do I know T3? Yes. Do I have to find out T2? Yes. How much is the height? So 20 meter per second. Can I find out T2 and then put it back over here? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Students, is it clear to all of you all? Yes, sir. Area under the graph. Area under the graph will be equal to half the sum of parallel sides of the trapezium into height. So we found out time taken in the second piece and then we added all the 3 times. Hope this part is clear to all the students. Swapnil, is it clear to you, Swapnil? Yes, sir. Okay, fine. Mayank? Mayur? Yes, sir. Okay. Ashmita? Aryan? Ansh? Bhumi? Arth? Ria? Ria, you joined in late, Ria? No, sir, I had first joined in at 7:30. Then I don't know what happened. I had some connection problem, so I had to rejoin again after 10 minutes. Oh my God. Okay, लेकिन प्रॉब्लम समझ में आया अभी तुम्हें? हाँ सर, समझ में आया. Okay, fine. Can I erase the students? Yes, sir. Okay. Ninth one. Sir, completed. Oh, ninth one. Who's completed this one? Nishant. So 2 students have raised hands. Nishant and Smith. Please, the rest of the students, what are you doing? Students. Students, ये questions easy है, kinematics का ही है. तुम graphically भी देख सकते हो, तुम ऐसे equations of motion भी use कर सकते हो. ये सारे linear motion के लिए. Try to think and get the answers, students. It's easy. Yes. Nishant, bolo. Ninth one. For ninth one, okay, fine. So first, they said that 900 distance he covers with an acceleration of 2 meters per second. So 900 is equal to half into 80 square distance. So then we can find t square is equal to 900. Time will be 30 seconds for the first half, distance covered. Okay. Okay. And for the second distance, we can find what we have to do is you have to find the velocity at the end point of the first distance covered. So the velocity of the end point will become v is equal to u plus 80. So then we'll get 2 into 30 because initial velocity was 0. So it will be acceleration into time 2 into 30, which is equal to 60 meters per second. Okay. Then now they said he'll run in a constant speed. So then we can use distance equal to speed upon time. So 60 is equal to 600 divided by t. Okay. So t is equal to 10 seconds. Absolutely correct. Then Now, for final. The final one, they said for him to reach the center of the track. So center of the track, so the track is 1,500 meters. So we divide the divided by 2, you get 750. Okay.
Now this the 750 meter range lies in the first part. So that means it'll be in a uniform acceleration. So we don't have to do any complicated calculations. So we just have to put a root to 750 is equal to 5 root 30 is equal to 27.35 or something. Okay, absolutely correct. स्टूडेंट्स देखो ये भी क्या किया है मालूम है, यही प्रॉब्लम को ब्रेक करते करते सो मेनी थिंग्स हैव कम अक्रॉस। स्टूडेंट्स ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करो तो तुम्हारा कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाता है। तुम हर एक स्टेप्स को, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट्स ऑफ द क्वेश्चंस को सॉल्व करो स्टूडेंट्स। नाउ सी द नाइन्थ वन, लिसन केयरफुली व्हाट एग्जैक्टली द नाइन्थ वन इज स्पीकिंग अबाउट। एन एथलीट रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर्स, यानी ये तुम्हारा नाइन्थ वाला स्टूडेंट्स एग्जैक्टली कंपैरेबल टू द सेवंथ वन की समझी था। यहाँ पे एथलीट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये बी पे पहुंच रहा है स्टूडेंट्स, ये 1500 मीटर की रेस है। Are you getting it? Now उन्होंने क्या बोला स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 0 मीटर पर सेकंड उन्होंने बोला है। Are you getting it? He accelerates himself uniformly at 2 meter per second till it covers 900 meters. यानी यहाँ पे अगर मैं देखूं तो this is 750, तो approximately 900 will be somewhere over here. I'll take it for 900 meters, students. Okay, so distance covered is 9. Okay, so now 600 meters will be the latter part of it. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्टेंस कवर्ड इज 900 मीटर्स, और उन्होंने बोला कि 900 मीटर्स के लिए उसका मोशन क्या है, इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड विद 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्टूडेंट्स। ओके, ही देन रन्स द रिमेनिंग डिस्टेंस, ये जो 600 मीटर रन कर रहा है, इट इज अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी यहाँ पे स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। स्टूडेंट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल जा रहा है पहले केस के लिए। ये तुम्हारा S1 है, इसके लिए तुम्हें T1 नहीं मालूम, ये तुम्हारा S2 है, इसके लिए तुम्हें T2 नहीं मालूम, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे मालूम है, एक्सेलरेशन यहाँ पे मालूम है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, अगर मैं बोलूँ कि मोशन एक्सेलरेट तो यहाँ पे तुम्हें v नहीं मालूम, वो ही v थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। See the way of approach towards the problem. Calculate the time by the athlete to cover the two parts of the distance covered. यानी हमें टाइम चाहिए दोनों केस में। तो उसने क्या किया? Simply he used the first relation, students, v minus u. Are you getting it? In terms of it upon a, या तो तुम टाइम अगर चाहिए तो you can directly go for first case, अगर मिले तो s is equal to ut plus half a t1 square। तो s1 कितना दिया है 900, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, half into acceleration is 2 into t1 square students। तो what exactly t1 इसको कितना मिला 30 seconds मिला। Agreed? Can I find out time taken in the second case? Students, can you find out time taken in the second case? So now if I happen to consider we need to go for velocity, उसके बगैर तो हम मिलेगा नहीं। स्टूडेंट्स अभी देखो मैं तीनों इक्वेशन यूज कर रहा हूँ, एवरीबॉडी लिसन केयरफुली, मुझे टाइम चाहिए, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे काइनेमैटिक्स यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो टाइम कैसे मिलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन किसी भी हाल में मुझे v फाइंड आउट करना है, मेरे हाथ में v नहीं है फ्रेंड्स, मेरे हाथ में फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है, और वो फाइनल वेलोसिटी कहाँ से मिलेगी सर, यहाँ से मिलेगी कि इनिशियल 0 है, जब भी बॉडी एक्सेलरेट होगा तो गेट सम v। हाउ डू आई गेट v? सिंपल, v is equal to u plus at। एग्रीड? सो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल तो 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 2 in time t 30, what's my final velocity 60 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट्स। नहीं समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? यहाँ पे स्प्रिंटर अपनी रेस शुरू करता है, इनिशियल स्पीड 0 है, वो भागता है 900 मीटर्स, और उसका स्पीड बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। जब भी वो यहाँ पे आता है जो 900 मीटर्स पे है, तो उसकी स्पीड कितनी है 60 मीटर्स पर सेकेंड, लेकिन उसके बाद में उसने स्पीड कांस्टेंट रखी। तो व्हाट इज द टाइम टेकन इन द सेकंड केस? सो टाइम टेकन इन द सेकंड केस इज डिस्टेंस कवर्ड। हाउ मच इज डिस्टेंस कवर्ड? 600। व्हाट इज द स्पीड? 60। व्हाट इज द आंसर? 10 seconds। क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन? इतना क्लियर हुआ सबका स्टूडेंट्स? यस सर। नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है, दूसरा पार्ट क्या पूछा है स्टूडेंट्स, द लास्ट पार्ट, ऑल्सो फाइंड द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द सेंटर ऑफ द ट्रैक। हमें देखो टाइम फॉर टू पार्ट्स, सेंटर ऑफ द ट्रैक यानी
Yani I have to go for point A, point B, center yani somewhere over here, point D. ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, टोटल डिस्टेंस 1500, तो सेंटर यानी कितना होगा 750 मीटर्स. मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, जब ये डिस्टेंस 750 मीटर्स है, is this distance covered by the runner? Is this distance covered by the runner is with constant speed or the motion is accelerated? तो तुम तुरंत अपना विजन इस तरफ लेके जाओगे. सर ए से शुरू करोगे, 900 मीटर्स तक बंदा का स्पीड बढ़ रहा है, ये तो आप 750 बोल रहे हो, तो 750 इज लेस देन 900. सर तो ये तो मोशन एक्सेलरेटेड है, ये तो मोशन एक्सेलरेटेड है स्टूडेंट्स. ओ यानी सर यहाँ पे जो एक्सेलरेशन 2 है वो हम सेम पकड़ेंगे. यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 है, हाँ सर वो ही पकड़ेंगे. मुझे सिर्फ पूछा है टाइम टेकन. कैन आई फाइंड आउट टाइम टेकन नाउ? अरे हाँ सर, एस तुम्हें पता है, यू तुम्हें मालूम है, टी तुम्हें चाहिए, एक्सेलरेशन तो वो ही है, टी चाहिए तो ये तो 0 हो जाएगा. 750 is equal to half. This is 0 because initial velocity is 0. Acceleration is 2 into t square, students. So what is t will be equal to? Root of 750. And what is the answer of root of 750? Root of 750. What do you got the answer as, Nishant? Nearly 27. 0.4 seconds. 4 seconds. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आपको? Students, are you getting it? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. स्टूडेंट्स अभी 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 बहुत हो गया स्टूडेंट्स, अभी अभी बहुत हो गया, अभी इनफ ऑफ योर्स. तुम्हें आना चाहिए. नाउ ट्राई टू सॉल्व द 10th and 11th. 10th and 11th, how many people have got it? Students, raise your hands. Again, 2 students, Smith and Nishant. स्टूडेंट्स अगर ये दोनों को मैं अगर क्लासरूम से निकाल दूं, स्मिथ और निशांत को दोनों को निकाल दूं, तो आई फील लाइक आई वोंट गेट एनी आंसर्स ओनली फ्रॉम एनीवेयर एल्स. हाँ मयांक, स्वप्निल, क्या कर रहे हो तुम लोग? अलीशा, Sir, I'm trying to solve. स्वप्निल आंसर दो ना यार. ऐसा क्या, अगर बिंदास आंसर तो गलत होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. शुभम, नहीं सर, सॉल्व कर रहा हूँ मैं. फाइन फाइन. Okay, now Swapnil and Nishant, just hold a moment, okay? Let others get the answer. 10th one is a good question, है लेकिन 10th का हाँ 10th is a good question क्योंकि पूछा find the least time in which it can complete journey of 5 kilometer. Least time. Friends, can I erase this? इसको erase कर दो. Friends, can I erase this? Yes, sir. Okay.
Yes, anybody? A vehicle starting from rest can accelerate uniformly at the rate of 10 centimeter per second square and can retard uniformly at the rate of 20 centimeter per second square. Find the least time in which it can complete the journey of 5 kilometers. If maximum velocity attained by the body is 72 kilometers per hour. First time is given to you as, first is 10 centimeter per second square. Other one is 20 centimeter per second square. Acceleration for the first case is given to you as, it's given in centimeters. Please students, ये ध्यान में रखना 10 centimeter per second square. और second case में acceleration दिया है 20. यार ये retardation students. Yes, sir. Yes, anybody else? But sir, since acceleration is in centimeter per second squared, we'll need to convert kmph into centimeter per second, right? Meter per second square. Check. A is in And, meter per second square, right? velocity is also kilometers per hour, so it's meter per second. So what is the velocity will be? 20 meter per second. 20 meter per second. Yeah. Okay, yes, 72 kilometers per hour will be 20 meter per second. Okay, sir. Into 5/18 students. अगर kilometers per hour को meters per second में convert करना तो multiply by 5/8. Okay, and we have to find T1 and T2, right? Yeah, find out the least time in which it can complete a journey of 5 kilometers. Students, least time in which it can complete a journey of 5 kilometers. Okay. Come on, anybody else? Sir. Oh. Just one question, sir. So in this question over here, what is it saying? That in the first half it is accelerating and in second half it is decreasing. Yes, it's decreasing. The motion is accelerated, and then in the second case for time t2, it is motion is getting retarded. Yeah, for half the distance it's retarded, right? For half the distance. Who did they say half the distance? Okay, No, they're not. telling you to find out least time for 5 kilometers. This is the head. This is the part to understand. Okay, sir. Understood. Mayank has got the answer. Mayank, chalo answer bolo. Mayank. Yes, sir. How do you solve it, bolo? So first you have to convert the acceleration into meter per second square. Okay, so what is the acceleration in the first case? So for the first case, it will be 0.1 meter per second square. Okay, meter per second square, and over here acceleration over here will be minus 0.2. Sir, I don't everything in centimeters. okay. Doesn't matter. Keep it in centimeters also. Doesn't matter. So, That depends on you. How do you go about with it? Okay. So maximum velocity will be 20 meter per second. Okay. Then. So then you use v is equal to u plus at to find time, which will be Okay. So in the first case, you are saying it. We'll find out time, that is v minus u upon a1. So final velocity is 20. Initial is 0. A1 is 0.1.
So you mean to say time in the first case is 200 seconds. 200 seconds. Okay, so ये time हुआ 200 seconds, students. Okay. Second case के लिए तुम करोगे T2 is equal to V minus U upon T2. So T2 will be equal 0 to minus 20. 0 minus 20 That's upon minus 2.2. So what is the time taken in second case will be equal to how much? 100 seconds? Yes. Okay, 300 seconds. Okay, then Then you find the distance covered in both the cases during acceleration and retardation. be loud and clear. Your voice is getting lowered. So then you have to find the distance covered during acceleration and retardation. Okay, that means students, the answer sunna. He's finding out the total distance covered for the total time taken T1 and T2. How do you find out? S is equal to U plus ET for the ET square. So it will be for the first case, during acceleration, you will get 2000 meters. Okay, that means you are trying to find out S1 and S2 separately. Yes, sir. Okay, can't you find out area under the graph to get it more faster? You can. Half into base, है ना? Into height. Height is V. Students, क्या समझ में आ रहा है? उसने ऐसे निकाला ना. वो क्या कर रहा था मालूम है? माइन क्या कर रहा था? He's correct. S1 और S2 दोनों निकाल रहा था. Using कौन सा? S is equal to U plus half it square. देखिए अगर मैंने ग्राफ बना दिया तो can I go for graph? Yes. S is equal to how much is the total time taken? So 200 plus 100, that will be 300. How much the velocity is given to me? 20. So can I say S is equal to how much I'll consider? So that is 3000 meter. Any actual distance कितना cover हुआ है? 3 kilometers. Students, यानी 3 kilometers के लिए what is the time taken? What is the time taken? 300 seconds. क्या ये clear हुआ? Students, is this clear, all of y'all? Yes. Yes. पूछा क्या उन्होंने? पूछा क्या है students? Find the least time in which it can complete the journey of 5 kilometers. Yes, man. Now move further ahead. So after this, you can do P is equal to, so the remaining distance the vehicle has to cover is 2000 meters. Yes. So since And that is covered with what speed? 20 meters per second. How do you come to that conclusion? It's covering with 20 meters per second. So because they're asking for least time taken. So least time means the highest the maximum velocity in it. Okay, students. Students, least time is always with maximum speed. Agar speed maximum hoga, the time taken will be the least. I getting it? Students, अभी answer देखो. 300 kilometers के लिए. What is the remaining distance if I consider? Remaining distance then मुझे 5 kilometers के लिए चाहिए ना? So students, अगर मुझे, ध्यान से सुनना, अगर मुझे least time चाहिए, तो what about speed maximum होना चाहिए? How is speed and time? Inversely, speed is equal to what? Distance covered per unit time. So what is the change in distance we consider? So change in distance, if I happen to consider, will be equal to what? Sir, 5 kilometers, that is 5000 meters, minus 3000, that is the balance. What is the speed with which its cover is? 20 meters per second. So what is the time taken for this will be? So this is 2000 upon 20. So what exactly we consider is 100 seconds. Yani initially it was 300 plus then 100. So what is the total time taken? The total least time taken for 5 kilometers will be equal to how much? 400 seconds. Kya ye clear hua, students? Students, is it clear? Time taken. The difference in time taken we consider is what? Ye delta T hoga tumhara. Yes, That is 100 to consider. So now what is the total time? Pehle case mein 300 kiya tha for 3 kilometers. Baki ka jo 2 kilometers tha, that is what we consider. So total time taken will be 400 seconds. Is this clear to all of you all? Ashmita, is it clear? Riya, clear? Yes, sir. Clear. Yes, Smith sir. and Chand. Smith and Nishant, have you done in the same manner? Yes, sir. We have got the answer. Yes, sir. Okay, fine. Did you get the answer, Nishant? Yeah, I got the answer.
Okay, fine. Can I erase it, students? Shall we go for the last question, 11th one? Rather than doing the graph way, I just done calculation ways with just u is equal to Yeah, you can use kinematics also. You can simply, rather than going for graph, but यहाँ पे area under the graph से तुम्हें मिलता था. And mine was also giving the same answer in that case, S1, S2 separately निकाल रहा. But that's also, you can go for it. You'll get a correct answer in either case. So students, you should try to understand कि कहाँ पे तुम्हें graphically भी तुम्हें answer मिलता है. और students, जब भी तुम linear motion के questions करते हो ना, तो you'll get answers. Graphically भी solve करोगे तो तुरंत answer मिलता है. And you know what a slope means and what is area under the graph means. That's very important for a student to understand. Can I erase the students? Yes. So हम erase करो. Yes, sir. Okay. Okay, the last question, 11th one. Anyone? This is it's an easy question. Huh? I don't feel like I should solve it for you. 11th one. I want anybody else to answer. Ashmita, answer 11th one. Come on. Ashmita, are you there? Yes, sir. बोलो कैसे करोगे? So T1 is 100 second, where Be acceleration. loud. Be loud. Take the mic close to you. So, हाँ बोलो. so T1 is 100 second, where acceleration is increasing. Okay. And, next T2 is 5 minutes, means 300 second, It goes where at constant speed. acceleration is constant. Okay. Next, the train is coming from constant, then the initial velocity is 0. And Okay. So initial velocity is 0 and final velocity, you know what? Final velocity is also Not given to you or given to you? no, sir. Okay. So it is given v is equal to 0. No, u is equal to 0. Final velocity is not given to you. No? First case, motion is accelerated. Runs at constant speed for 5 minutes and comes to rest. So acceleration यहाँ पे positive है. Runs for constant speed यानी acceleration 0 है. And then comes to rest यानी acceleration negative है. Yes, sir. लेकिन ये negative है. It's in how much time? ये तुम्हें T1 दिया है. So ये T2 is 5 minutes. T3 is 150 seconds. 150 seconds. Okay. Hmm. About T2. Okay. Now the question asks is, during the motion, it covers a distance of 4.25 kilometers. What is 4.25 kilometers? So 1.18 meters. No. What is 4.25 kilometers according to you? Uh, During its motion, it covers a distance of 4.25 kilometers. उसका मतलब क्या? so total distance. Absolutely correct. Total distance. How do you get total distance from here? Total distance का मतलब क्या हुआ? तो तुम बोलोगे सर total distance का मतलब S1, S2, S3. यानी कहने से area under the graph. आया ना? Yes, sir. तुरंत देखो स्टूडेंट, या तो तुम इक्वेशंस यूज कर सकते हो. S1 निकालो, S2 निकालो, S3 निकालो. आया ना स्टूडेंट्स? तुम्हें v पूछा है ना. देखो ना पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड आउट द कांस्टेंट स्पीड. यहाँ पे स्पीड इज कांस्टेंट. तुम्हें ये v चाहिए जो मुझे नहीं पता. तो मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, S1, S2, S3 से तुम करोगे तो तुम्हारा प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा या एरिया अंडर द ग्राफ लोगे तो प्रॉब्लम छोटा होगा? प्रॉब्लम छोटा होगा एरिया अंडर द ग्राफ लेके Area लोगे. under the graph. देखो ना, हमें तुरंत हो गया. टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? टोटल डिस्टेंस इज 4.25 किलोमीटर्स. फ्रेंड्स 4.25 किलोमीटर. कैन आई कन्वर्ट इनटू मीटर? मल्टीप्लाई बाय 1000. 4250. Yes. So can I say total distance is 4250? What is area under the graph, Ashmita? Area of trapezium. Absolutely So- correct.
So half the sum of, Half into some parallel lines into height. so what is the parallel sides over here? 300. ये क्या होगा? Agreed? Yes, What is sir. that parallel side? T2. 300. T2 plus ये parallel side पूरा है, ये क्या होगा? 500. 550. 550. हाँ, यानी T1 plus T2 वापस आएगा, T2 plus T3. And what is the height? What is the height? Height is acceleration. Velocity. Shivam, Velocity. velocity. Height is velocity. Velocity. Are you getting it? V. समझ में आया? देखो ना, half the sum, ये एक parallel side हुआ और ये दूसरा parallel side हुआ into it, और ये पूरा एक bracket में ले लिया. Now can you substitute it? हाँ सर, ये 4250 into 2 होगा. ये अभी ऐड करो, ये T2 कितना है सर? 300 850. plus 100 plus 300 plus 150 into V. Sir, Can I get 850. V? Pardon? 850, sir. It is 850 over here total. हाँ. Velocity. So now can I get the answer for V? क्या मिलेगा V? Sir, V is 10 meter per second. Yes. Okay. Now, Ashmita, next part क्या होगा? क्या पूछा है next part? Acceleration and retardation. अभी easy हो गया? Yes, sir, it's easy. First case acceleration. In the first case, V square is equal to Are you Ashmita? Are you Ashmita? Oh, Shivam, naughty boy. Gender, naughty boy. Sir, I'm Okay. Soham. I am Soham, sir. अच्छा, sorry, Soham. You're Soham, na? Yeah, Soham. Okay. Okay. That's what I said. कि मैं अश्मिता को पूछ रहा हूँ, तू ये आंसर दे रहा है कब से? अश्मिता को हेल्प कर रहा है ना? हेल्प कर रहा है ना उसको? अश्मिता, do you need his help? I am sure it is not. She's not answering. बोलो. Who's answering? I was saying, sir, in the first case, Soham, sir, Soham. Soham, बोलो. In the first case for acceleration, we can say that V is equal to ut plus half at square. So V minus U upon T लेना. Simply we can use V is equal to velocity. This formula. Yes. Yeah, we can use that also. So V कितना है? 10 upon T. U is 0, so it is 10 minus 0 upon 100. So that is 0.1 meter per second. Square. Square, yeah. और second case के लिए? Second case के लिए we know that V is 0 and ये T1 है. T3. In second case, for acceleration retarded, we have 0 minus 20. Yeah. 10. Not 20, 10. Sorry. Yes. T3 is how much? Upon 150. So we What's have acceleration? minus 1 upon 15, which is how much? अभी बोल. अभी fraction में एक मिनट convert कर रहा हूँ. कैलकुलेटर यूज करेगा, है ना? Calculator कैलकुलेटर equal to 0. पापा है minus पापा है 0. पापा को पूछता हूँ, कैलकुलेटर यूज कर रहा है ना? नहीं यूज कर कैलकुलेटर. minus 0.0 क्या था? 100 upon 15 कितना? आंसर छाप लिया पीछे से. 0.6 something. Okay, fine. Is this clear, students? देखो यहाँ पे motion is accelerated, यहाँ पे motion is retarded in that case. तो पहले से is this clear, students, all of them? Yes, sir. Can I erase this now? Yes, sir. Now, students, I want you to get one important mathematical relation, students. Now we go for projection on an inclined plane. जब भी questions आएंगे inclined plane के लिए, students, वो straightforward question होंगे. I want you to simply get me the formula for range covered for an inclined plane, students. Okay, I'll give you the diagram, students. Use your approach towards your part of it and try to think how to go about with such kind of questions, students. Okay, it is the heading I'll try to put forward is projection on an inclined plane, students. Okay,
projection on an inclined plane. Friends, I want to get the answer for how exactly projection takes place on an inclined plane. I want to find out the range. So let us understand that part of it, students. अगर तुम देखोगे ये तुम्हारा horizontal है. This is what an inclined plane. Okay. तो ये तुम्हारा ground है, students. और मैं body को project कर रहा हूँ. Let us say that this particular inclined plane is at an angle phi. ये देखो मैंने symbol अलग use किया phi. This is point O. तो अगर मैं ये बॉडी को यहाँ से मैं इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अगर मैं प्रोजेक्ट करता हूँ तो इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v0. तो इसका जो पाथ होगा स्टूडेंट्स, इट्स इन दिस मैनर ऑन द इंक्लाइन प्लेन. यानी ये हुआ तुम्हारा पाथ. ओ से शुरू होता है, स्ट्राइक होता है एट पॉइंट ए. एग्रीड. लेट अस अज्यूम दैट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ए इज एट अ हाइट h from point B on the ground level. OA is the length of the inclined plane. The speed with which the body is projected is v0. The speed with which the body is projected is v0, students. And this v0 students, forms an angle theta. Forms an angle theta with the ground. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? लुक एट द टू वेरिएबल्स. अगर किसी ने पूछा स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस वेरिएबल थीटा इज, तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए? सो सर थीटा इज द एंगल विथ व्हिच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड v0 with respect to ground. But is the body falling on the ground? No. The body is made to fall on an inclined plane. How is this inclined plane is placed with the same ground, with the same horizontal at an angle phi? What does phi stands for? Phi. ये है symbol for phi. क्या ये clear हुआ? Is this much clear, students? Yes, sir. I want to find out, students, the range of projectile. I want to find out the range of projectile. How do you get range of projectile? Now, listen carefully, students. जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है और तुम्हें प्रूव करने के लिए बोलता है हाँ यू कैन मींस यू नीड अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर दिस टू गेट योर आंसर, तो तुम क्या करो स्टूडेंट्स? ट्राई टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक इन दिस मैनर कि जो v0 है, आंसर सुना स्टूडेंट्स, ये जो v0 है इट फॉर्म्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड. तो कैन आई रिजॉल्व दिस v0 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? स्टूडेंट्स हम ट्राई टू रिजॉल्व v0 एट एन एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? तो इसका जो v0 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा के साथ में क्या होगा? तो थीटा के साथ में होगा v0 cos थीटा, है ना? उसी का वर्टिकल कंपोनेंट स्टूडेंट्स कैसे होगा? सर ये वाला होगा वर्टिकल कंपोनेंट. क्या ये क्लियर हुआ? ये क्या है सर? दिस इज v0 sin थीटा. क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ स्टूडेंट्स, हमने v0 को रिजॉल्व किया है विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल. तो ये तुम्हारा vx होगा, v0 cos थीटा और v0 sin थीटा. लेकिन स्टूडेंट्स, इज माय बॉडी प्रोजेक्टेड on the ground or on an inclined plane? On an inclined plane. Now suppose if I say can I resolve this v0, listen carefully, can I resolve v0 with respect to the inclined plane? Yes. What is the angle? What is the angle formed with the inclined plane? Sir ये पूरा थीटा है, ये phi है. तो देखो स्टूडेंट्स, क्या ये एंगल थीटा माइनस phi हुआ? हाँ स्टूडेंट्स, ये एंगल देखो, ये एंगल कितना हुआ? थीटा माइनस phi. नाउ कैन आई रिजॉल्व दिस v0 विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन? अरे हाँ सर, एक वेक्टर इस तरफ जाएगा
और दूसरा वेक्टर इसी को परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है? ओ यानी सर v0 को अगर आप रिजॉल्व करते हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा माइनस पी, तो ये होगा v0 cos थीटा माइनस पी। अरे हाँ सर, ये तो वेलोसिटी अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा, है ना? ये क्या होगा सर? ये होगा v0 sin of theta minus p. Is this clear to all of you? Yes. Now, when the body is said to project on an inclined plane, students, what about the acceleration you'll consider? जब ये बॉडी प्रोजेक्ट होता है इंक्लाइन प्लेन, तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या बोलोगे? तो तुरंत तुम्हारा कंसेप्ट जाना चाहिए लॉज ऑफ मोशन के ऊपर। तुम बोलोगे सर अगर ऑब्जेक्ट आप प्रोजेक्ट कर रहे हो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, उसका मतलब, ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, तो इसी का मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाता हूँ। सर उसका मतलब ये है कि ये आपने फी बोला है ना? आपने बोला बॉडी यहाँ से प्रोजेक्ट होते हुए बॉडी यहाँ पे आया है, एग्रीड? तो जब ये बॉडी यहाँ पे लॉन्च होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे व्हाट अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी? What is the effect of gravity? If I'm speaking about accelerations, what is the effect of gravity I'll consider? So effect of gravity यानी g तो नीचे की तरफ होगा perpendicularly, लेकिन उसी g को can I resolve into two components? Can I resolve into two components? Can I resolve into two components? Yes. अगर ये तुम्हारा, sorry, this is not theta, this is phi. So this is phi. This angle is phi. Okay. So can I resolve this particular g with respect to angle phi? Yes. तो देखो ये 90, ये भी phi हो जाएगा। तो ये क्या होगा सर? ये होगा acceleration along y-axis, and that is equal to what? Acceleration along y-axis will be minus g cos p. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? क्या ये क्लियर हुआ? Acceleration along y-axis is minus g cos p, है ना? ये क्या है? Acceleration along y-axis. What is acceleration along y-axis? G sin phi. हमें acceleration along y-axis, sorry, acceleration along x-axis is this. Acceleration along y-axis is, हमें acceleration along y-axis लेना है। स्टूडेंट्स अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो मैंने क्या बोला था स्टूडेंट्स? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन था ना, जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन था तो उस टाइम पे मैंने क्या बोला था? डू वी हैव एनी एक्सेलरेशन along x-axis? No, zero. What about acceleration along y-axis was minus g. कुछ याद आ रहा है? Exactly same way यहाँ पे अगर मैं बोलूँ the body is projected on an inclined plane, so what is the acceleration along y-axis is minus g cos phi. क्या ये क्लियर हुआ सबको? शायद तुम लोगों ने प्रॉब्लम्स किए होंगे स्टूडेंट्स लॉस ऑफ मोशन में। ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, कैसे टाइप की प्रॉब्लम्स किए होंगे लॉस ऑफ मोशन में? हाँ स्टूडेंट्स, तुम लोगों ने शायद कोई ऑब्जेक्ट लिया होगा इंक्लाइन प्लेन पे। हाँ स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास ले लिया, एंगल थीटा। स्टूडेंट्स चलो रिजॉल्व, वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्टूडेंट्स अगर मैं वेट को रिजॉल्व करता हूँ इनटू टू कंपोनेंट्स, ये सब लोग ने पढ़ा है स्टूडेंट्स, ये किया है कि नहीं किया है? Yes, sir. ना सपोज अगर ये बॉडी को मुझे ऊपर की तरफ खींचना है तो मुझे यहाँ पे मेरा अप्लाइड फोर्स होगा स्टूडेंट्स, एग्रीड? अगर मेरा अप्लाइड फोर्स, ध्यान से सुना, अगर मेरा अप्लाइड फोर्स इससे ज्यादा होगा तो क्या होगा? मोशन ऊपर की तरफ जाएगा, फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ या ना? Yes, sir. Students, are you getting it? I'm not speaking about kinematics, I'm speaking about laws of motion. अभी सोचो कि यही चीज मैंने पुल्ली के अराउंड ले ली है और यहाँ पे मैंने टेंशन ले लिया स्टूडेंट्स, तो ये बॉडी को होल्ड कर रहा है। अगर बाय चांस मैंने सीजर से ये थ्रेड को काट दिया तो मुझे बताओ कौन सा एक्सेलरेशन उसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है? कौन सा फोर्स उसको नीचे की तरफ लेके जा रहा है? 10 की sin थीटा. That is the force down the inclined plane. So what is the acceleration down the inclined plane? G sin theta. So same thing, what is the acceleration down the inclined plane? G sin phi.
What is the acceleration along y-axis? gy minus g cos phi. क्या ये क्लियर हुआ? यहाँ पे मैंने acceleration लिया है, यहाँ पे मैंने weight लिया, देखो ना, सिर्फ g की जगह पे मैंने mg लिखा है. अगर मैं इसको भी मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मास से मल्टीप्लाई कर दूं, मास से मल्टीप्लाई तो मेरा यही फॉर्मूला, यही फ्री बॉडी डायग्राम आएगा. Is this clear to all of you? Yes, sir. Now, can you find out the range? Now, can you get the answer for the range? Then you'll say yes, so we can get the answer for the range very easily. How do you go about? Everybody listen carefully, students. How do you go about? So, सबसे पहले students to find out the range. Please pay attention. Which triangle you will consider for range? Everybody now the answers to students. Which triangle I will consider for range? So let us go for this right angle triangle, students. ये 90 degree. ये तुम्हारा range है. ये point A है. ये point B है. ये point O है. तो ये angle phi हो जाएगा, है ना? ये तुम्हारा range मुझे चाहिए, है ना? तो कौन सा तुम लोगे? सर cos phi यानी adjacent will be x upon hypotenuse. मुझे चाहिए range. So what is range? X upon cos phi. क्या ये equation clear हुआ सबको? पहला step. This is a step 1. Is this clear to all of you all? Range is equal to x upon cos phi. Is this clear to all of you all? Yes, sir. X कैसे निकालोगे? अब देखो second step. Second step. X is what? So that's the distance along the horizontal. देखो x कहाँ पे है? Where is x? Along OB. Everybody the answer सुनना. Along OB. Can you tell me what is the speed along OB? Is it V0 cos theta? या V0 cos of theta minus phi? Along x-axis. OB. तो ये होगा ना तुम्हारा speed. है ना? है ना? इसी डायरेक्शन में जा रहे हो ना तुम? जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर होगा उसी डायरेक्शन में स्पीड होगा. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? सर speed is equal to distance upon time. Therefore, can I write on the formula for range as how? Therefore, range is equal to, instead of x, students, can I write on V0 cos theta into time the whole upon cos phi. क्या ये क्लियर हुआ सबको? पुनः आ रहा है. Is this clear, students? Students, is this clear to all of you all? Yes, sir. Speed is equal to, see the angle, consider angle, distance upon time. So range is equal to speed into time upon cos phi. This is cos theta. Now, can anybody tell me what is this small t? So, बता सकते हैं what is this small t? Students, what is this small t? Anyone? So it is for the horizontal distance. X, है ना? है ना? अभी आंसर देखना. everybody आंसर सुनना. अगर मेरा मोशन O से शुरू हो रहा है, ये है मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये है मेरा इंक्लाइन प्लेन का, और ये है मेरा प्रोजेक्टाइल का. ध्यान से देखना. अगर मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ता है, प्लीज पे अटेंशन. मैं यहाँ से आई एम ट्राइंग टू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर. स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? The two linear motions along the horizontal and vertical, they are separate, they are totally different from each other. They are not dependent, they are independent of each other. तो देखो, अगर मैं horizontal distance x1 लेता हूँ, तो उसी टाइम पे स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, मेरा vertical distance कितना होता है? y1.
At the same time, can I say the body is covering certain distance along the range also? उसी टाइम में T1 में ये होगा R1. Everybody listen carefully. अगर सपोज मैं यहाँ से यहाँ पे पहुंचता हूँ x2, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, तो उसी टाइम पे मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना जा रहा है? R2 जा रहा है कि नहीं जा रहा है? देखो आया ना, इन टाइम व्हाट T2. लेकिन जब भी मैं O to B की तरफ पहुंचता हूं और वो अगर मैं X लेता हूं, यानी मैं O to B की तरफ लेता हूं, तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो ना, तो कैन आई गेट द कंप्लीट रेंज? अरे हाँ सर, यानी जब भी आप O to B हॉरिजॉन्टल पूरा X कवर करते हो इन टाइम T, तो प्रोजेक्टाइल इंक्लाइन प्लेन पे पूरा रेंज कंप्लीट करता है. क्या ये क्लियर हुआ सबको? स्टूडेंट्स, क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? ये डिस्टेंस correspondingly I'm getting this as the range in the same time because I'm dropping a perpendicular. अगर ये range होगा, sorry, अगर ये horizontal distance होगा in certain time, so my range will be this much. But now if my distance is x, correspondingly my distance along the inclined plane will be r. Time taken as t we consider. क्या ये क्लियर हुआ सबको? तो मैं आगे बढ़ूं. Yes, sir. अगर तुम ये समझ गए स्टूडेंट्स, तो तुम्हारा प्रूफ इजी हो गया. तो कोई भी स्टूडेंट बोलेगा स्मॉल टी है क्या, स्मॉल टी है क्या, तो तुरंत स्टूडेंट्स का आंसर होगा सर स्मॉल टी. आप ये बोलना चाहते हो कि स्मॉल टी इज अ टाइम ऑफ फ्लाइट? इज स्मॉल टी अ टाइम ऑफ फ्लाइट? हाँ सर, इट्स अ टाइम ऑफ फ्लाइट. क्योंकि जितने टाइम में अगर मैं ये डिस्टेंस कवर करता हूँ, उतने ही टाइम में बॉडी यहाँ पे लैंड हो रहा है. अरे हाँ सर, ये तो सही हो गया. यानी ये जो स्मॉल टी हम देख रहे हैं, व्हाट इज अ स्मॉल टी वी कंसीडर इज टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको मैं कैपिटल टी लिख सकता हूँ. ये हुआ तुम्हारा सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेप एनीबॉडी यू कैन टेल मी स्टूडेंट, ध्यान से सुनना. जब भी हम ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करते थे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन करते थे, स्टूडेंट्स हाउ कुड यू फाइंड आउट टाइम ऑफ फ्लाइट? Students, how did you find out time of flight? Can I say I can use the equation S is equal to ut plus half at square? Students, listen carefully. If I'm going for ground to ground projection, can I use to find out time of flight as S is equal to ut plus half at square? Displacement we consider, velocity along y-axis, ये small t बन जाएगा time of flight. Acceleration along y-axis, ये होगा time of flight. Do anybody knows the formula for time of flight for ground to ground projection? Do anybody knows the formula for time of flight for ground to ground projection, students? 2u sin theta by g. Correct. 2u sin theta by g. तो देखो यहाँ पे भी सेम आएगा. देखो ना, सॉल्व करो. सर जब भी तुम बॉडी को यहाँ से लॉन्च कर रहे हो और यहाँ पे आ रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या बन जाएगा? 0. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? सर ये तो u sin थीटा होगा इनटू t. एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस व्हाट? -g. स्टूडेंट्स, ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ. तो ये क्या होगा? -half into what? Half into g. If I say half into g, then what exactly will be? It will be half into g into t square. Now solve this. Take this on the other side. Half g t square is equal to u sin theta into t. T and t will get cancelled. Did I get the time of flight? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट? स्टूडेंट्स, क्या ये पार्ट क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स, मुझे इंक्लाइन प्लेन के बारे में समझाना है, ना कि ये. लेकिन इसको समझने के लिए मैंने वापस में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन पे ले गया. वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने कैसे लिखा? स्टूडेंट्स, टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने वहां पे जब भी सिखाने के टाइम पे मैंने कैसे सिखाया था? टाइम ऑफ असेंट निकाला था इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इज एडिशन ऑफ द टू. वो भी तुम कर सकते हो डायरेक्टली अगर तुम्हें चाहिए तो. यूज दिस इक्वेशन. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? सर तुमने शुरू किया ग्राउंड से, वापस तुम ग्राउंड पे आए हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0. व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर दिस? क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ स्टूडेंट्स, are you getting it? Say yes or no. Yes, Yes. sir. तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट का ये रिलेशन है स्टूडेंट्स.
तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए तुम क्या करोगे सर? यहाँ पे भी टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए यूज एग्जैक्टली सेम इक्वेशन. देखो सेम इक्वेशन, लेकिन स्पीड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना. अभी यहाँ पे कौन सा स्पीड तुम पकड़ोगे वो तुम्हें ध्यान में रखना है, बिकॉज द प्रोजेक्शन इज अलोंग द इंक्लाइन प्लेन. नाउ लेट अस गो फॉर दैट पार्ट ऑफ इट. तो अभी मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्योंकि हमें चाहिए टाइम टेकन फॉर व्हाट? टाइम टेकन फॉर द बॉडी टू रीच ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. डिस्टेंस कवर्ड इज कैपिटल आर. सुन, जैसे मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, क्या मैं यहाँ पे इसको सबमिट कर दूं? Yes, हाँ, sir. मुझे रेंज का फॉर्मूला मिल गया. यानी मुझे किसी भी हाल में टाइम ऑफ फ्लाइट ही चाहिए बस. टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मुझे चाहिए तो मैं कौन सा इक्वेशन यूज करूंगा? सर आपने बोला ना अभी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो मैं इसको कैपिटल टी लिखूंगा, ये भी टी स्क्वायर लिखूंगा. सर ये तो आपने बोला प्रोजेक्शन इज अलोंग एन इंक्लाइन प्लेन है, आया ना? ये एंगल क्या है सर? ये एंगल फी है. ये बॉडी प्रोजेक्ट हो रहा है, लैंडिंग हो गई है. दिस इज o एंड दिस इज a. तो व्हाट एग्जैक्टली द टाइम वी कंसीडर इज? सर टाइम के लिए अगर मुझे चाहिए तो ये एंगल मुझे पता था थीटा माइनस फी है ना? तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या होगा? सर डिस्प्लेसमेंट अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विल बी 0. ये बॉडी यहाँ से शुरू हो रहा है, पॉइंट ए पे आ रहा है. एग्रीड? यहाँ पे तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ होगा? वाई एक्सिस. व्हाट इज द एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस स्टूडेंट्स? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस? अब ध्यान से देखना, दो इनिशियल वेलोसिटीज है. फ्रेंड्स, विल यू गो फॉर v0 sin थीटा और will you go for v0 sin थीटा माइनस v? चलो बताओ uy के लिए. देखो दो है ना, एक v0 sin थीटा, एक v0 sin थीटा माइनस v. कौन सा लोगे तुम? Which one will take us initial velocity uy? Theta minus 5. Absolutely correct. उसके लिए एक सेकंड थॉट भी नहीं आना चाहिए स्टूडेंट्स. तुरंत तुम्हारे मुंह से आंसर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं साइन थीटा लूंगा तो मेरा प्रोजेक्शन ग्राउंड टू ग्राउंड हो जाएगा भाई. आगे वाले में डेरिवेशन में किया था ना, हमने वही लिया था ना, वर्टिकल लिया था ना v0 sin थीटा. लेकिन ये तो इंक्लाइन प्लेन पे. सर इंक्लाइन प्लेन के लिए मुझे ये वाला कंपोनेंट्स लेने होंगे. समझ में आ रहा है? यानी ये वाला कंपोनेंट कौन सा है? v0 sin ऑफ थीटा माइनस p. अरे हाँ सर, ये अगर मैं ले लूं मेरा इनिशियल, तो ये होगा v0 sin थीटा माइनस p plus half. What is the acceleration along y-axis? So the body has reached over here. What is the acceleration along y-axis? Acceleration due to gravity. And what is that? क्या ये क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स, क्या ये क्लियर हुआ? The body is on the inclined plane. तो देखो इंक्लाइन प्लेन के टाइम पे मैंने ये रिजॉल्व कर दिया, एक्सेलरेशन along y-axis and t स्क्वायर. आ गया तुम्हारा टाइम. देखो स्टूडेंट्स, पहले केस में भी हमें ऐसे ही इक्वेशन मिल रहा था, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में भी हमने इस तरफ लेके सॉल्व किया था. अभी देखो सेम मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट इज 0. क्या ये पार्ट सबको क्लियर हुआ? तो मैं आगे बढ़ूं. It's of no use pushing myself onto you all. It's no use pushing myself onto you all. All the students inside the group. Ria, are you getting it? Ria, are you understanding? Ria, are you there? She's not replying. Those who are not replying, I'll throw them out of the lectures now. उनको निकाल रहा हूँ lectures से. Nishant, are you getting it? Yes, sir. Okay. Alicia, she's also not there. Ashmita, are you getting it? Yes. अगर नहीं समझ में आया तो पूछो अभी, प्लीज. Trisha, Mayank, Yes, sir. okay. Panchal, Mayur, Smith, are you getting it? Yes, sir. Swapnil, Shubh, Vansh, Yes, sir. okay.
What about Pratham? Pratham, are you there? Students, यानी ध्यान से सुनना, तुम्हारा ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट तुम्हें मिल गया, देखो. Yes, sir. Understood. ओके, UT यानी सॉरी, ये T यहाँ पे आएगा, ये 0 इज इक्वल टू ये T मैंने यहाँ पे लिखा हूँ. यस है, ये देखो, ये T, ये वेलोसिटी अलॉन्ग एक्सिस. अगर मैं इसको इस तरफ ले लेता हूँ तो देखो Okay. ये क्या होगा, G/2 Uh, cos P into T square is equal to T into V0 sin of theta minus T. Can I cancel Okay. this? So what's the Yes, sir. formula Can for cancel. time of 2 V0 sin of theta minus T upon G cos T? क्या ये क्लियर हुआ? Yes, ये sir. हुआ तुम्हारा टाइम ऑफ फ्लाइट. Clear. स्टूडेंट्स, इसको तुम कैसे याद रखोगे? स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला को कैसे याद रखोगे टाइम ऑफ फ्लाइट का? तो तुरंत व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट इन द फर्स्ट केस? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या फॉर्मूला क्या था? 2u sin theta by g था, है ना स्टूडेंट्स? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में क्या था? 2u sin theta by g. अभी यहाँ पे तुम्हें क्या कहना है? मैं ये u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे भी तुम अगर मैं u लिखूं तो u आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इनिशियल वेलोसिटी है. sin थीटा, थीटा क्यों था? बिकॉज इट वाज विद हॉरिजॉन्टल. यहाँ पे भी इंक्लाइन प्लेन आएगा तो थीटा माइनस p. वहां पे g आएगा, लेकिन यहाँ पे g cos p आएगा बिकॉज acceleration along y axis. Friends, it's very easy for one to remember this formula. अब ये t तुम कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे? रेंज में डाल दोगे. आ गया तुम्हारा रेंज का फॉर्मूला. तो स्टूडेंट्स, व्हाट एग्जैक्टली द फॉर्मूला फॉर रेंज विल बी? सब्स्टिट्यूट दिस t back over here. Therefore exactly capital R will be equal to, so capital R will be t को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो 2 मेरा आ जाएगा. v0 into v0 will be v0 square. First I'll write on sin of theta minus p into cos theta upon g cos p into cos p cos square. क्या ये क्लियर हुआ रेंज? So this is a clear range. Your range will be equal to g cos square p sin of theta minus p cos theta and v square. Have you all understood this? Yes, sir. Understood. The students, now when you're solving problems based on to inclined plane, students अभी ये ध्यान में रखना, हमेशा problems they'll ask you with respect to R and with respect to T. ये हमेशा ध्यान में रखना students. Alright? अगर तुम्हें पूछा स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, where exactly the body is made to land on a project on an inclined plane at what height above the ground? तो तुम्हें h पूछा है. देखो अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रिगो है. स्टूडेंट्स, अगर मुझे रेंज मिल गया स्टूडेंट्स, इफ आई नो द रेंज एंड इफ आई नो h, कैन आई यूज cos phi, sorry sin phi? What is sin phi? Opposite upon hypotenuse. So students, what is sin phi? H by r. Can I get height? Clear? Students, is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Can I erase this? 1 minute.
Can I erase now, students? Students, those who are there for your mains point of view, students, you'll be having questions onto this. You might get questions onto this, but those who are for NEET, you may not get it. So that you don't have to worry about that. Can I erase this, students? Yes, sir. Okay. Now your last part of your chapter speaks about your riverboat problem, students. Okay. Oh, Devesh is still writing it. Students, और इसका तुम्हारा derivation तुम्हारे मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, students. It's given on page number 113, 114, 115. Are you getting it? They've given the formula. उन्होंने दूसरे वेरिएबल्स लिए. स्टूडेंट्स, अगर तुम टाइम ऑफ फ्लाइट देखोगे ना स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला तो दिया है 115 पे दिया है स्टूडेंट्स तुम्हारे मॉड्यूल में, लेकिन उन्होंने एंगल अलग दिया है. उन्होंने v0 की जगह पे u लिखा है. स्टूडेंट्स, लुक एट माय पेन. इसकी जगह पे u लिखा है स्टूडेंट्स. उन्होंने थीटा की जगह पे अल्फा लिखा है और फी की जगह पे थीटा लिखा है. एंड स्टूडेंट्स, आई कैन चेंज माय वेरिएबल्स. आई गेटिंग इट? ये cos ऑफ फी की जगह पे cos ऑफ थीटा लिखा है. ये थीटा और ये थीटा है टाइम ऑफ फ्लाइट. दूसरा, तुम प्रोजेक्टाइल करते हो स्टूडेंट्स, यहाँ से तुमने प्रोजेक्टाइल किया, उल्टा भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, फ्रॉम वर्टिकल, ओके, विद द वेलोसिटी. So those are simple linear kinematics use करके that is given on page number 116 students. सिर्फ दो relations है तुम्हारे बस. Easy way of getting the answers, students. Okay. And then you have your riverboat problem, students, based on that, and that will be the end of the chapter. Sir. Yes. So in kinematics 1 also, the last part in module, there's something Rain Man problem. Which one? Rain Man. Module. Ah, so they are identical to riverboat. We have done few questions on to Rain Man. Okay, and the same thing with riverboat. They are identical. And these are mostly for the mains point of view can be asked. लेकिन उसके एक दो problems lead students के लिए भी पूछ सकते हैं. So they are identical. ये कौन सा relative velocity के ऊपर जाते हैं students? Rainman problems and this one. So we'll be Yes. solving river. हम लोग riverboat problems भी करेंगे. ये relative velocity के ऊपर ही है. We'll pick up that. Okay, sir. Thank you. And I'll do riverboat problems. That is. Devesh, तुम्हारा complete हुआ Devesh? I'm waiting for you only because you texted करके you haven't done. Okay, fine. Students, we'll pick up. अभी देखो next lecture में we'll be picking up your riverboat problem, students. Okay, but kindly revise this particular formulas thoroughly. And next lecture, students, I'll be. Where do you have my next lecture, students? कभी मेरा next lecture? So I think tomorrow only. Okay, tomorrow morning only you have it. Yes, I think so. Okay, fine. So we'll complete with riverboat problem, students, and after that we'll be starting with a new topic, students. Circular motion. Clear, students? Okay. Yes, sir. Tomorrow morning we have 7:30. Okay, fine. Fine. So tomorrow we'll continue. Okay. लेकिन ये formulas revise करना, students. Okay. Yes, sir. Thank you. Yeah. Thank you, sir. Bye. Bye bye.